Hello everyone, welcome to Career Launcher, and today we are going to talk about IPMAT 2026. The exam is coming soon, and today we are going to talk about quantitative aptitude of, or I would say maths part of IPMAT Indore. And this time we have picked up the questions of PYQ 2022. So before I proceed, I want to ask, am I audible clearly, yes or no? So if I'm audible, kindly do let me know. Okay. So let's proceed. Let's start. Okay. So basically, what I'm going to do, I'm going to start with the first question. Now it says when Geeta increases her speed from 12 kilometer per hour to 20 kilometer per hour, she takes 1 hour less than the usual time to cover the distance at her home. Now, what distance between her home and office is? Okay. So now there are multiple ways to solve this question. The one thing is the standard concept of using distance formula, right? I can solve it by using distance formula. Now, second, I can also solve it by using proportionality. Now, let's take both the approaches. So, the first of all, when her speed is 12, the time she is taking is t. When her speed is 20, time she is taking is t minus 1. Now, I need to figure out, so if I am going to talk about distance, now what is the distance? Distance is equal to speed into time, so that is equal to 12 into t, right? That is the first approach I'm talking about. And what is the distance? Distance is going to be speed into time, that is going to be 20 times t minus 1. Fine. So this is going to be, I'm cancelling out by 4. So this is 3 and this is going to be what? 5. So I can say 3t and that's equal to 5t minus 5. And I can say 2t and that's equal to 5. So t comes out to be what? T comes out to be 2.5. Now, what is the distance we are talking about? Distance is speed into time, that is 12 into t, so 12 into 2.5. So answer comes out to be 30, and that is the first approach. So what is the distance we are talking about? That's 30 kilometers. Now, what is the second approach? Now, speed is 12 and 20, times are t and t minus 1. So when we talk about ratio of speed, when distance is constant, so when Geeta is going from her home to office, the distance is anyhow going to be constant. So when distances are constant, the ratio of speed, so ratio of speed is 12 by 20, is actually inverse proportion of time. So that is going to be t minus 1 upon t. Now I'm going to cancel out. This is going to be 3 and this is going to be what? 5. So now 3 upon 5 and that is equal to t minus 1 upon t. Okay. Now what we are going to do, now you might say that we can cross multiply and solve and get the answer. Okay, that is a good thing. But instead of that, we are not going to do that. Now what is the difference over here? That is 1. What is the difference over here? That is 2. Now I want to make this 2 as 1. So what I'm going to do, I'm going to divide numerator and denominator both by 2. So I am going to get 1.5 divided by 2.5. Now that is equal to t minus 1 divided by t. So t comes out to be 2.5, t minus 1 comes out to be 1.5. So what is the distance? That is going to be 12 upon t, that 12 into t, that is going to be 12 into 2.5. Answer comes out to be 30. So the two approaches are there. One is the proportionality approach that you can use, that you can directly use the ratio of speed is going to be inversely proportional to speed of time, inversely proportional to time. Second approach is you can equate the distances in both the scenarios and get the answer. Now let's move on to the next question. What does it say? It says Aruna purchases a certain number of apples at INR 20 each and a certain number of mangoes at INR 25 each. Okay. So the best part in this question is that the prices are given to us. The cost price is given to us. Okay. Now it is saying certain number and certain number, but it is not saying same numbers. So I am going to assume how many apples she is going to purchase. A apples,
and how many mangoes she is going to purchase, let's say M mangoes. Now she sells apples at 10% profit. Okay, so the price is 20, 10% profit is 2 rupees. So basically, what is the total profit she is going to generate? That is going to be 2 into A, because number of apples are A. So total profit becomes 2A. Okay, and mangoes at 20% loss. Okay, so the cost price of mangoes is 25. 20% is going to be 5 rupees. 20%, I can say it is 1 by 5. So 20% is 5 rupees. At every mango, she is losing 5 rupees. So what is the overall loss? That is going to be 5M. Now, in that case, total profit plus total loss, loss is definitely going to be negative, and in that case she is not making any money, so that is equal to 0. So I am going to say 2A is equal to 5M. Okay, now the second scenario, instead, if she sells apple at 20% loss, okay, so now at apples she is losing 4 rupees. So what is the overall loss? That is going to be 4A. So I am taking loss as negative. And she sells mangoes at 10% profit. So at mango, her profit is going to be 2.5, and that is equal to 2.5M. And in that case, she is losing money. And how much? That is going to be minus 150, because she is losing that money. So I am going to get equation that is equal to 4A plus 2.5M, and that is equal to what? That is equal to, sorry, that is going to be minus, and that is equal to 150, and this is what I'm getting. Now question is talking about how many apples are purchased by Aruna. Okay, so I have this equation that 2A is equal to 5M, so I can say A is equal to 2.5M. Now I am replacing this 2.5M with A. So I am going to get 4A minus A, and that is equal to 150. So this comes out to be 3A is equal to 150. So A comes out to be 50. So what is the number of apples? I am going to say that's 50. Now you might say, why I did not replace A by M, and why not? The reason for that is I am not looking for the value of M, I am looking for the value of A. So that's why I am replacing the value of M in terms of A, so that my linear equation stays as in terms of A. Okay. Now let's move on to the next one. And what does it say? The number of triangles that can be formed by choosing points from 7 points on a line and 5 points on a line, 5 points on another parallel line. Now, this is a good question. Now, what is the approach? Okay. So, I got one line, I got another line, and both lines are parallel. I got 7 points 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 points. I got 5 points over here 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. Now I want to make a triangle. How I am going to make a triangle? I can pick 2 points from here, 1 point from here. I'll make a triangle. So 2 points out of 7 points is 7C2. 1 point out of 5 points, that is 5C1. That is the number of triangles I'm going to get. Second possibility can be I can get 2 points out of these 5 points and 1 point from here. So I can also get 5C2 into 7C1, and that's simply going to be my answer. So it is going to be 21 into 5 plus 10 into 7. So that is going to be 105 plus 70, and it comes out to be 175. So what is the total number of triangles I am going to get? That is 175. Now that is the first approach. Now what is the second approach? Okay. To make a triangle, how many points you need? You need overall 3 points. Okay. Now, what is the total number of points you got? You got 7 points here, 5 points here. So total number of points are 12. So out of 12 points, how many triangles can be made? So out of 12 points, total number of possible triangles are going to be 12C3. Now it looks fine. But the problem is, from these 7 points, can you make any triangle? That's not possible at all. So that is equal to 7C3 triangles that should have been made.
जो 7C3 ट्रायंगल बनने चाहिए थे वो नहीं बन रहे हैं. Now again from these 5 points, can you make any triangle? No, because these points are collinear. So ये जो 5C3 triangle बनने चाहिए थे वो भी नहीं बन रहे. So what is the answer? That is going to be 12C3 minus 7C3 and minus 5C3, and that's going to be your answer. So you can do either this or you can do either this, and both approaches are going to give you absolutely same answer and correct answer. Okay. Now let's move on to the next one. What does it say? The new sequence is obtained from the sequence of positive integers 1, 2, 3 by deleting all the perfect square. ठीक. Now question is simply saying कि 2022 means यहां तक हमको जाना है. 2022 टर्म क्या होगा, हमें बीच के जितने परफेक्ट स्क्वायर हैं वो सारे हटा देने. ठीक. So I am going till this. ठीक. So by 2022, how many perfect square I am going to get? So I know that 45 square is 2025. ठीक है, तो 2022 तक हमको 44 परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे. ठीक है, अब नाउ बेसिकली 44 टर्म्स आई एम रिमूविंग. सो हमने 44 टर्म हटा दिए, तो जो 2022 है वो आगे बढ़ के 2066 हो जाएगा. क्योंकि बेसिकली अगर मैं 2066 तक लूंगा तो 44 टर्म तो मैं हटा दूंगा. राइट. सो मेरे 2022 टर्म बचेंगे. लेकिन एक दिक्कत है, जब मैं 2066 तक लिख रहा हूं तो मैंने ये टर्म भी हटा दिया होगा, तो मुझे एक और टर्म आगे जाना पड़ेगा. सो बेसिकली व्हाट इज द नंबर दैट आई एम गोइंग टू रीच व्हेन आई एम राइटिंग दिस टर्म. क्योंकि जब मैं 2067 लिखूंगा, till then I am going to get 45 perfect square, and after deleting 45 perfect squares I am going to reach at this term. So अगर ये नंबर लिखना है 2022 टर्म लिखना है, तो इसका मतलब I have to write till 2067, and that's the answer of this question. So basically this is what we are going to do in this. Okay. अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं. नाउ व्हाट डज इट सेज? इट सेज log of x square base x square y plus log of base y square x, and that is equal to 1, and y is equal to this. Now what is the value of x square plus y square? ठीक है. Now before we solve this, let's understand one rule. Now let's say a power n b. Now so this says 1 by n log of base a b. Now that is the first thing. Now what is the second thing? Log of a by b, log of base a b is 1 upon log of base b a. Now these two formula that we are going to use to solve this question. Okay. So if I am talking about first number, so what I am going to do, it can be written as 1 by 2 times log of base x y plus 1 by 2 times log of base y x, and that is equal to 1. Okay. Now I'm going to multiply with 2, so I'm going to get log of base x y plus 1 plus log of base y x, and that is equal to 2. Okay. Now log of base x y plus 1 upon log of base x y. This formula I am using over here, and that is equal to 2. Okay. Now basically I can say this number looks like a plus 1 upon a, and that is equal to 2. यहाँ से सीधे सीधे मुझे ये दिख रहा है a plus 1 upon a is equal to 2. अब यहाँ पे what we can do, we can take LCM and solve this and get the answer. वो सब ठीक है. But the thing is, what I can see in this particular question, that if I put a equal to 1, so 1 plus 1 and that's equal to 2, ये मुझे clearly visible. It means I can say this value should be equal to 1. Directly I can say this is 1, this is 1, this will become 2. So log of base x y, and that is equal to 1. So from here I can say x equal to y. Okay. Now I am going to solve this one. Now, so basically x is equal to y is equal to x, so I am just putting y equal to x. So x equal to x square minus 30. So I can write x square
minus x minus 30 and that is equal to 0. If I factorize, what I'm going to get? I'm going to get x minus 6 into x plus 5 and that's equal to 0. So from there I'm going to get x is equal to either 6 or minus 5. तो x या तो 6 है या minus 5 है. ठीक है. सो इन दो के अलावा और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है हमारे लिए. सो x इज आइदर 6 और x इज इक्वल टू minus 5. ठीक है. नाउ द प्रॉब्लम इज x minus 5 तो नहीं हो सकता. व्हाई नॉट? बिकॉज लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर होना पॉसिबल नहीं है. सो मुझे minus 5 को एलिमिनेट करना पड़ेगा. सो आई कैन से x केवल 6 है. So x 6 है तो y भी 6 है because x is equal to y. So what is x square? That is 36. What is y square? That is also 36. So answer comes out to be 72. So ये जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर जो होगा that is going to be 72. And this is how we can solve this question. Okay, so let's go to question number 4. Are you still here? So let's check question number 4 again. So, for example, I am going till n and उसमें जितने परफेक्ट स्क्वायर है वो हटा देने, राइट? दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? कि जितने परफेक्ट स्क्वायर आएंगे वो हटा देंगे. सो फॉर एग्जांपल, अगर इफ आई एम राइटिंग ऑल द नंबर्स टिल 10, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. इफ आई एम राइटिंग ऑल द नंबर्स टिल 10, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. अब ये क्वेश्चन कह रहा है सारे परफेक्ट स्क्वायर हटा दो. सो 1 2 3. तो अगर मैं 10 तक जा रहा हूं, सो हाउ मेनी नंबर्स आई एम राइटिंग? दैट इज 7. दैट इज द 7th टर्म. डू वी एग्री ऑन दिस? Yes or no? If I am going till 10, I am having the 7th number. Now the thing is, if I am reaching till so अगर कोई मुझसे पूछता है what is the 7th term, right? So what I am going to do, मैं सिंपली ये करूंगा कि 7 तक जितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो 7 तक 2 परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, 1 और 4. तो ये 2 ऐड करके मैं 9 पे पहुंच जाऊंगा. तो 9 जो होगा वो मेरा 7th टर्म होना चाहिए. लेकिन 9 मेरा 7th टर्म नहीं हो सकता. क्यों? 9 खुद भी एक परफेक्ट स्क्वायर है. तो मुझे एक टर्म और आगे जाना पड़ेगा. मतलब मेरा अगर कोई पूछता है कि 7th टर्म क्या होगा, तो वो 9 होना चाहिए बिकॉज 9 इटसेल्फ इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो मुझे एक टर्म आगे जाना पड़ेगा. डू वी एग्री ऑन दिस? सो इसको सॉल्व करने के लिए मैं वही लॉजिक यूज कर रहा हूं कि 2022 तक जाना है हमको. वी हैव टू गो टिल 2022. तो वहां तक के जितने परफेक्ट स्क्वायर हैं वो हटा दिए. सो 2022 तक 44 स्क्वायर है. तो 44 स्क्वायर है, तो 44 स्क्वायर आपने कम कर दिए, राइट? सो नाउ व्हेन यू आर राइटिंग 2022, दैट्स नॉट योर 2022th टर्म. ठीक है. आप 2022 जब लिख रहे हो तो वो आपका 2022वां टर्म नहीं है. आप 44 टर्म माइनस कर चुके हो. तो अगर आपको 2022वां टर्म लिखना है तो आपको 44 नंबर और आगे तक जाना पड़ेगा. डू वी एग्री ऑन दिस? तो आप जा रहे हो 2022 प्लस 44, 2066 तक. एग्रीड? सो जब आप 2022 से 2026 2066 तक जा रहे हो तो आपको एक और परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, दैट इज 2025. तो आपको एक नंबर और आगे जाना पड़ेगा. सो दैट, क्योंकि एक नंबर और आपने काट दिया तो एक नंबर और आगे जाना पड़ेगा. सो यू हैव टू गो टिल 2067. डू वी एग्री ऑन दिस? यस? नो? ठीक. सो बेसिकली दिस इज द ओवरऑल अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 तक सबको क्लियर है? एनीवन हैज एनी डाउट टिल क्वेश्चन नंबर 5? किसी को अगर कोई क्वेश्चन नंबर 5 तक डाउट है तो ठीक है, आई विल डू इट अगेन. अदरवाइज आई विल कंटिन्यू टू क्वेश्चन नंबर 6. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? नाउ देयर आर मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, मिस्टर एंड मिसेस आहूजा and 4 more people. So Mr. and Mrs. Sharma are 2 people, Mr. and Mrs. Ahuja 2 people, and 4 other people. So what is the total number of people we are talking about? हम बात कर रहे हैं टोटल 8 लोग बैठे हैं, 8 लोग सर्कुलर टेबल में बैठे हैं.
ठीक है, राउंड टेबल पे बैठे, ठीक है। नाउ इट सेज मिस्टर एंड मिसेस शर्मा एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। सो सबसे पहला अंडरलाइन कंसेप्ट इसका जो है, इफ n people are sitting in a circle, they can be seated in n minus 1 factorial ways. So if n people are sitting in a row, if n people are sitting in a row, the total arrangements are going to be n factorial. If n people are sitting in a circular arrangement, the total arrangements are going to be n minus 1 factorial. ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टर और मिसेस शर्मा को साथ में बैठना है, मिस्टर और मिसेस आहूजा को साथ में नहीं बैठना है, तो कितने अरेंजमेंट होंगे? अब ये क्वेश्चन है कि अपने पास दो कंडीशन है कि इनको साथ में बैठना है, इनको साथ में नहीं बैठना है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि बेसिकली मैं एक केस लेता हूं जहां पे मिस्टर और मिसेस शर्मा एक, सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट 8 पीपल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैं एक केस ले रहा हूं कि मिस्टर और मिसेस शर्मा साथ में बैठे, तो आई एम कंसिडरिंग दीज एज वन एंटिटी। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल आई एम गेटिंग? 7। 7 लोगों के कितने सर्कुलर अरेंजमेंट होंगे? दैट इज 6 फैक्टोरियल। नाउ इन दोनों के भी आपस में ये दोनों भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होंगे? इनटू 2। सो मैं ये वाला केस अभी तक कंसीडर किया ही नहीं हूं। आई एम ओनली कंसीडरिंग कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आर सिटिंग टुगेदर, देन व्हाट आर द पॉसिबल नंबर, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, दैट इज गोइंग टू बी 6 फैक्टोरियल इनटू 2। 6 फैक्टोरियल 720 होता है, इनटू 2 दैट इज गोइंग टू बी 1440, ठीक है। नाउ सेकेंड केस ये है कि आई एम गोइंग विद 8 people, 1 2 3 4 5 6 7 8, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा साथ में बैठे हुए हैं एंड मिस्टर एंड मिसेस आहूजा भी साथ में बैठे हुए हैं। सो बेसिकली व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट? 1 2 3 4 5 6। नाउ 6 people कैन सिट इन हाउ मेनी वेज? 5 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है। नाउ दीज 2 people कैन इंटरचेंज इनटू 2 फैक्टोरियल, these two people can interchange into 2 factorial and that is the total arrangement. तो इसका मतलब 5 factorial is 120 into 2 into 2, that is going to be 480, ठीक है। These are the total arrangements where Mr. and Mrs. Sharma are sitting together. These are the total arrangement where Mr. and Mrs. Sharma are sitting together as well as Mr. and Mrs. Ahuja are also sitting together. अगर मैं माइनस कर दूं तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा तो साथ में बैठे हैं, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस आहूजा साथ में नहीं बैठे होंगे, एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस आवर आंसर एंड दैट इज गोइंग टू बी 960. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 960. Now let's move on to the next one. What does it says? There are 50 distinct positive integers to be chosen such that highest among them is 100 and average of largest 25 integers among them exceed the number of remaining integers by 50, the maximum possible value of sum. ठीक है, अपन को सम मैक्सिमाइज करना है। सम मैक्सिमाइज करना है इसका मतलब नंबर्स भी बड़े बड़े होने चाहिए, ठीक है। और जो टॉप 25 का एवरेज है वो बॉटम 25 के एवरेज से 50 ज्यादा है, तो इसका मतलब मुझे टॉप 25 का एवरेज मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। सो अगर टॉप 25 का एवरेज मैक्सिमाइज करना है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू? हाईएस्ट नंबर इज 100, देन आई एम गोइंग टू गो टू 99, देन आई एम गोइंग टू गो टू 98, और मैं 25 नंबर ऐसे ही लिखना शुरू कर देता हूं एंड आई एम गोइंग टिल 76. 25 numbers are these top 25. Why I can't take every number as 100? Because we are talking about distinct numbers. Okay. So 900, 99, 98 and so on up to ये अपने पास 25 numbers. Now what is the average of these 25 numbers? So simple, we can see, हमको ये तो दिख रहा है कि AP है, AP होगा तो AP का एवरेज क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 एंड दैट गिव्स अस 80. सो टॉप 25 average comes out to be 88, total comes out to be 88, average into number of terms, so 88 into 25. now bottom 25, अब देखो टॉप 25 अगर मैक्सिमाइज हो गया तो बॉटम 25 अपने आप ही मैक्सिमाइज हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज द एवरेज ऑफ द टॉप लार्जेस्ट 25 इंटीजर्स
is exceeding the bottom 25 by 50. So bottom 25 का कितना आ गया 38, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 25. सो ओवरऑल एवरेज जो होगा वो ओवरऑल सम जो होगा वो टॉप 25 का सम प्लस बॉटम 25 का सम. So I can directly say that is going to be 25 into 88 plus 38, and that is going to be 126. So this comes out to be 3150. So answer of this question is going to be 3150. So this is how this question should be approached. आप बॉटम को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हो, आप टॉप को मैक्सिमाइज कर सकते हो और उसके हिसाब से आप बॉटम का कैलकुलेशन कर सकते हो. और बहुत आसान है. क्यों? क्योंकि टॉप 25 के एवरेज और बॉटम 25 के एवरेज का डिफरेंस हमें डायरेक्टली गिवन है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. व्हाट डज इट से? ठीक है, when the square of difference is subtracted. ठीक है, when the square of difference of two natural numbers. Very nice. So basically दो natural number मैं a और b ले लेता हूं, दोनों का difference है a minus b. इनका जो स्क्वायर है वो इन दोनों के सम से सब्ट्रैक्ट किया जाता है. ठीक है, जो वैल्यू आती है उसको 4 से डिवाइड किया जाता है. अब बेसिकली ये फॉर्मूला तो हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 4ab एंड 4ab डिवाइड बाय 4 एंड दैट कम्स आउट टू बी ab. अब ये जो है ये तो अपना आ गया. अगर अपने पास 4 नंबर है, अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर जो आंसर आ रहा है वो 2 नंबर का प्रोडक्ट. ठीक है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट क्या उनका एलसीएम होगा? कोई जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. सो ये तो नहीं होगा. द स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये भी जरूरी नहीं है. The product of LCM and HCF of two numbers. Now this is true. And why? Because for any two numbers, product of LCM and HCF is always equal to product of the numbers itself. So answer comes out to be this, and that is going to be option C. इसके लिए आपको नंबर्स की ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इटसेल्फ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. If one of the factors is chosen at random, what is the probability that it is going to be a perfect square? ठीक है, सो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है तो अपना आंसर तो बड़ा सिंपल है कि प्रोबेबिलिटी जो होगी वो अपनी सिंपल होगी कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो हमको बस इतना निकालना है कि टोटल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने हैं और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं. तो ये नंबर जो है, सो अगर एक नंबर a पावर p, b पावर q, c पावर r, d पावर s एंड सो ऑन के फॉर्म में गिवन है, वेयर a b c d आर प्राइम नंबर्स, देन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आर गिवन बाय p plus 1, q plus 1, r plus 1 एंड s plus 1. ठीक है, सो इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे 8, 3 पावर 7, सो 7 से एक ज्यादा 8 इंटू 9 इंटू यहां पे क्या आएगा 4. सो ये आए. ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट आर परफेक्ट स्क्वायर. अगर मुझे ये निकालना है कि फैक्टर्स जो होंगे परफेक्ट स्क्वायर होंगे तो मैं 3 पावर 7 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालता हूं. ये कैसे आएंगे? 3 पावर 0, 3 पावर 2, 3 पावर 4 एंड 3 पावर 6. 3 पावर 7 के 4 फैक्टर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है. 2 पावर 8 के कितने होंगे? 2 पावर 8 के होंगे 2 पावर 0, 2 पावर 2, 2 पावर 4, 2 पावर 6 एंड 2 पावर 8. इसके तो 5 होंगे. ठीक है, 17 पावर 3 के कितने फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे? 17 पावर 0 एंड 17 पावर 2. So total number of factors that are perfect square are going to be 4 into 5 into 2, and that gives us 5 divided by 36, and that is going to be option D. So this is how it should be approached. Now let's look at the next one. So basically the curve represented by the equation. अब ये क्या है? ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो शायद मैं एग्जाम में कभी नहीं करूँ. क्यों नहीं करूँ? अब यहां पे एक डाउट है. डाउट क्या है कि
जब भी आप एक इक्वेशन देखते हैं जहां पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिखता है, तो इसका मतलब तो सिंपल ये होता है, दिस इज गोइंग टू बी एलिप्स। ठीक है। जब भी हमें दिखता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज गोइंग टू बी 1, ये होता है पैराबोला। यहाँ पे दिक्कत ये है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको अटेम्प्ट क्यों नहीं करूंगा, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स यू आर गोइंग टू बी कंफ्यूज्ड, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, अगर इसमें से कोई एक वैल्यू नेगेटिव हो गई तो वो एलिप्स की जगह पैराबोला हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे ये चीज ध्यान देने वाली। और अगर एलिप्स मिल भी गया, अगर ये भी पता चल गया एलिप्स है या पैराबोला है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब उसमें भी अब क्वेश्चन तो सारे के सारे ऑप्शन एलिप्स और हाइपरबोली बोल रहा है, सो इसलिए ये क्वेश्चन डाउटफुल होगा। ठीक है। खैर एनी जब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर करते हैं, तो इसमें ये निकालना होता है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। ठीक है। अब वही चल के देख लेते हैं। अब यहाँ पे साइन रूट 2, अब ये जो वैल्यू है ये डिग्री में नहीं है, ये रेडियन। ठीक है। साइन रूट 3, ये भी रेडियन में है। Now basically sin root 2 is going to be close to sin 80 85. ठीक है। So this number is going to be close to 1. ये वाली वैल्यू होगी ये 9, ये 100 के आसपास आएगी, तो sin 80 माइनस sin 100। अब sin 100 तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा sin 100। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू गेट अ नंबर दैट्स लेस देन 1। ठीक है। cos 2, ये भी cos 80 हो जाएगा, 80 के आसपास कुछ। cos रूट 3, ये अपना cos 100 के आसपास हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि ये वाली वैल्यू आपकी 1 से बड़ी हो जाएगी, सॉरी। सो यू गॉट x स्क्वायर अपॉन अ नंबर दैट्स लेस देन 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन अ नंबर दैट्स ग्रेटर देन 1। सो बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी एन एलिप्स, एंड ये नंबर क्योंकि बड़ा है इसलिए इसका जो फोकस होगा ये आपका एलिप्स कुछ ऐसा बनेगा। तो इसका जो फोकस लाई करेगा वो y एक्सिस पे करेगा, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। And I'm not saying this question is difficult because of this. I'm saying this question is difficult because figuring out this and this is going to be a lot more trickier. तो इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चन, it is suggested that this is not a question that is doable because calculating sine root 2 and sine root 3 is a tricky task. And with this, let's conclude this session. Thank you. And if anyone has any doubt, kindly do let me know. Thank you.